हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है नेचर विद नितिन। सो गाइस, जैसे आप जानते हो मैं बुडापेस्ट हंगेरी में रहता हूँ एंड आई डू ट्रैवल ब्लॉग। आज मैं पहुंच चुका हूँ हंगरी की एक ब्यूटीफुल सिटी है टैपोल्का करके। आप मेरे पीछे ब्यूटीफुल लेक, जो छोटा सा लेक देख रहे हो, दिस इज़ द प्लेस टैपोल्का। ये बुडापेस्ट से अराउंड 3 आवर्स के डिस्टेंस पे है। मैप में आप देखोगे काफ़ी नियर बाय लगता है, बट द ट्रेन जर्नी टेक्स अराउंड 3 आवर्स। सो आई जस्ट रीच हियर। आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, विंटर चल रहा है गाइस। ये एक लेक है एंड टैपोल्का फेमस है काफ़ी, वो है एक लेक केव राइड के लिए। इस वॉकिंग ऑन द रोड यू विल गेट टू सी दिस साइन बोर्ड। यहाँ से अराउंड एक केव जो लेक है वो 700 मीटर्स पे। यू आर वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन नाउ, सो यू हैव टू वॉक स्ट्रेट ओवर हियर। मेरे पीछे जो लोकेशन देख रहे हो, दिस इज द लेक केव सेंटर एंड फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन डू द बुकिंग फॉर अ लेक राइड एंड आई जस्ट गो इनसाइड एंड ट्राई टू गिव मोर information on the tickets and what are the timings and how much time it takes, what are the places they cover. About the charges, around 4,200 adults के लिए है और 2,700 kids के लिए है। ये इनका एग्जीबिशन सेंटर है एंड वंस यू एक्सप्लोर द एग्जीबिशन सेंटर देयर यू कैन गो फॉर द बोट राइड। यहाँ पर एक स्कूबा डाइवर उन्होंने डिस्प्ले में रखा है नीचे, इट्स रियली अमेजिंग। एंड यहाँ पर आप लेक की फ़ोटोज़ देख सकते हो जो स्कूबा डाइविंग करके यहाँ पर। दिस इज़ ब्यूटीफुल। सो गाइस, यहाँ पर इन्होंने एवोल्यूशन दिखाया है फ्रॉम 1910 से लेके 1930, 40, 60s और 70s में ये कैसा दिखता था। सो गाइस, इस तरह से आपको बोट दी जाती है एंड आप खुद चला सकते हो। So guys, I'm riding this beautiful boat. It's really amazing.
So guys, I just came from the boat ride and this is really amazing experience. It was really amazing experience and I would definitely recommend, अगर आप आते हो, अगर आप टैपोल्का विजिट कर रहे हो, then cave जो boat ride है, please do it. If you are coming to Hungary and looking for other locations to visit, and if you are living in Hungary and still you're looking for some locations to visit, then I think Tapolca is the best location, guys. So yeah, thumbs up. So guys, this is the beautiful Tapolca and नीचे वहाँ पर एक थोड़ा सा lake है. So I'm just going towards that direction now. And very lucky people, they are having such beautiful houses. So guys, this is the train I'm gonna catch for Budapest platform. So guys, that's all about today's vlog on Tapolca. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, please do like my video, please subscribe my channel if you haven't subscribed it. See you in another video in another city. Till then, be safe and keep traveling, guys.